Hello everyone, hope you all are doing great. So this video will be about RBC indices, okay? RBC indices, I will try to make this a shorter video. And yeah, RBC indices, they are very important in view of your practicals mein when you are given hemoglobin estimation, no? So during the Viva they ask RBC indices, PCV, MCV, MCH, इनका normal ranges they can ask. और इधर प्रैक्टिकल्स के टाइम पे क्वेश्चन होगा टू कैलकुलेट एम सी वी एम सी एच ओके सो लेट्स बिगिन ठीक है सो वॉट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इज पी सी वी एम सी वी एम सी एच एंड एम सी एच सी ओके दीज आर द ओनली टॉपिक्स विल बी कवरिंग नाउ विल सी कि क्या होता है ओके सो फर्स्ट वट इज द वन थिंग विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ऐसा कि निमोनिक है बट मतलब निमोनिक भी नहीं है लाइक you remember कि all M starting ones are for a single RBC okay जो भी M से स्टार्ट होने वाले हैं दे आर फॉर वन RBC ओनली तो मतलब MCV MCH एंड MCHC ये सारे दे आर ओनली फॉर वन RBC ओके नाउ विल बिगिन सबसे पहले पीसीवी एक बार क्लियर हो गया ना सो रेस्ट ऑल द थिंग्स का फॉर्मूला यू कैन डिराइव ओके सो पीसीवी का अदर नेम इज हेमाटोक्रिट ओके बट व्हाट इज दिस पीसीवी का फुल फॉर्म इज पैक्ड सेल वॉल्यूम and you know very it is very easy because you don't have to remember anything if you remember कि from my first video blood में what were the constituents of blood plasma RBC WBC platelets ठीक है नाउ तुमने ट्यूब में डाला था जिसमें ETT डाला था ताकि ब्लड शुड नॉट क्लॉट एंड फिर तुमने क्या देखा कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन के RBCs वुड सेटल डाउन RBCs प्लाज्मा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था 55% राइट एंड WBCs प्लेटलेट्स जो कि बफी कोट में थे तो वो तो लेस देन 1% थे ओके सो वील कंसिडर देम एज नेग्लिजिबल एंड फिर RBCs कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे 45% ऑक्यूपाई कर रहे थे so RBCs how much percentage of the blood they were occupying 45% and you know what this is what PCV is okay so PCV as you know that RBCs occupy 45% of the blood तो उसका यूनिट इज परसेंट पीसीवी इज द सेम एज हेमाटोक्रिट व्हाट इज इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल ब्लड डू दे ऑक्यूपाई ओके तो पीसीवी का फॉर्मूला क्या हो गया आरबीसी के कॉलम का लेंथ अपॉन टोटल ब्लड के कॉलम का लेंथ into 100 because you have to calculate it in percentage right so hope you have understood it normal ranges see 45% you remember but for males के cases में it will be slightly more and females में it will be lesser okay okay so hope you have understood PCV and hematocrit now we'll get into MCV okay at the start of the video what did I tell कि M starting ones किसके लिए है for one RBC के okay तो सबसे पहले फॉर्मूला we'll see क्या है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मीन मतलब एवरेज राइट एंड कॉर्पस्कुलर मतलब आरबीसी की बात हो रही है एंड वॉल्यूम ओके सो और क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम एम तो व्हाट डिड आई टेल कि ये वन आरबीसी का है सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि वन आरबीसी का व्हाट इज द एवरेज साइज ओके सो वॉल्यूम मीनिंग साइज ओके so volume को generally how do you measure it in liters but RBCs are very small okay so we'll measure it in femtoliters FL is for femtoliter so MCV का unit is femtoliter what will it tell about the average size of an RBC for one RBC now how do you अभी okay so you know the meaning okay but you're not able to remember the formula during the exam तो कैसे याद रख सकते हो कि I will tell you मतलब easy है so ठीक है ये एक बिल्डिंग है एंड ये बिल्डिंग में देयर आर रूम्स ओके सो ईच रूम विल ऑक्यूपाई सम स्पेस तो इफ़ आई नो कि टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं रूम्स सो इफ़ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑल द रूम्स दिया है कि टोटल जो रूम्स है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं
and if you know the total number of rooms which are your 8, तो तुमको एक रूम का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट? एंड हमको यही कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 RBC. सो हाउ कैन यू कैलकुलेट? इफ यू नो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑल द रूम्स एंड इफ यू नो द नंबर ऑफ रूम्स, तो वही है. तो मतलब इफ यू नो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑल द RBCs, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑल द RBCs, वो कौन बताता था? दैट वॉज योर PCV. So if you know PCV और टोटल नंबर ऑफ रूम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ RBCs इफ यू नो, सो यू विल गेट कि एक RBC में कितना वॉल्यूम है एक RBC का. सो दैट इज अ फॉर्मूला. MC which is measured in femtoliters, the formula is PCV upon RBC count. Total volume occupied upon the total number of RBCs will give you the volume occupied by 1 RBC. Now अभी ये इंटू 10 क्यों है? इंटू 10 इज जस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. देखो नॉर्मली क्वेश्चन में RBC काउंट मिलियंस पर माइक्रोलीटर में दिया रहता है, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10. अगर क्वेश्चन में RBC काउंट मिलियंस में दिया है, सो यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 1000. ओके, सो यू हैव गॉट, आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ नॉर्मल रेंज क्या है MCV का? नॉर्मल साइज क्या है RBC का? दैट इज 80 to 100 femtoliters. सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज. एक तो क्या RBC का साइज नॉर्मल रेंज में है 80 to 100 femtoliters, सो यू विल कॉल इट नॉर्मोसिटिक. इफ RBC का साइज लेस देन 80 हो गया, मतलब RBCs आर कंपैरेटिवली स्मॉलर, सो स्मॉल है, सो यू विल कॉल इट माइक्रोसिटिक. एंड इफ 100 femtoliters से ज़्यादा है, सो यू कॉल इट मैक्रोसिटिक. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड MCV. नाउ हीमोग्लोबिन मेल्स में कितना होता है? 13.5 to 18 ग्राम्स पर DL. ये तो यू जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज. फीमेल्स में 12 to 16 ग्राम्स पर DL. ओके, और क्वेश्चन आ सकता है अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो तुमको हीमोग्लोबिन दिया होगा, यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1.34. ओके, नाउ विल गेट इनटू आवर टॉपिक. क्या था? MCV, MCH. ओके, नाउ विल कम टू MCH. MCH. ओके, सो विल सी द फॉर्मूला. क्या है? मेन कॉर्पस्कुलर hemoglobin. So what I wanted to remember is कि MCH आया ना, तो you should remember mass या तो amount. okay, you remember mass. MCH है तो you have to calculate mass. किसका mass? कितना hemoglobin present है in 1 RBC. See, M से start हो रहा है, so for 1 RBC. H है तो hemoglobin, तो एक RBC में how much amount of hemoglobin is present? That is your MCH. So it is average hemoglobin per RBC. Now this also you don't need to mug up the formula. You can derive it on spot. कैसे derive करोगे? ओके, सिमिलर वे जैसे इसमें क्या था, अगर तुमको पता है कि टोटल हेमोग्लोबिन कितना है, ओके, मतलब सारे RBCs का मिला के टोटल हेमोग्लोबिन इफ यू नो, एंड इफ यू नो द टोटल नंबर ऑफ RBCs, you will get 1 RBC में how much hemoglobin is present, जो कि कैलकुलेट करना था, जो कि MCH था, राइट? सो द फॉर्मूला यू डोंट हैव टू मग अप. टोटल हेमोग्लोबिन पता है और टोटल नंबर ऑफ RBCs पता है, सो यू गेट MCH. वाई इंटू 10? बिकॉज ऑफ यूनिट्स. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 10, जब RBC का काउंट मिलियंस पर माइक्रोलीटर में हो. इफ RBC का काउंट इज इन मिलियंस, तो यू मल्टीप्लाई इट विथ 1000. Now normal range, MCH का normal range मतलब normally how much amount of hemoglobin should be present in 1 RBC? That is 27 to 32 picograms. हाँ, picograms, how will you remember? I told you mass normally we measure it in kilograms, but RBCs में hemoglobin का mass will be very less, so picograms. Now MCHC. now MCH and MCHC में confusion होता है. okay, now we'll see the formula. पहले तुमको दिख रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा C है. ओके, सो व्हाट इज इट दैट फॉर? MCHC का फॉर्मूला इज मेन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, कॉन्सेंट्रेशन इज द न्यू टर्म विच इज कमिंग. ओके, सो हाउ विल यू रिमेंबर? ओके, चलो विल सी. ठीक है, विल कंसिडर कि 2 रूम्स है एंड दोनों में भी there are 10 people. okay,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, and even here there are 10 people. 3 4 5 6 7 8 9 10. बट एज यू कैन सी आरबीसी का साइज इज रूम्स का साइज इज डिफरेंट. तो अगर वो आरबीसी के टर्म्स में फील्ड्स है तो एमसीवी डिफरेंट है. बट अमाउंट मतलब नंबर ऑफ पीपल तो दोनों में भी 10 है. मतलब अमाउंट कौन बता रहा था? एमसीएच. ओके, सो एमसीएच तो सेम है. बट now you will get what is MCHC. MCHC is concentration. कौन से केस में concentration of people is more? So let's give this A and this as B. So ज़्यादा concentrated people तो B में है ना. B में the people will not have space, okay. But A में so they will be sparsely distributed. वो दूर दूर रह सकते हैं because the room is bigger. बट बी के केस में द रूम इज स्मॉलर तो फिर वो कंजेस्टेड हो जाएगा, राइट. सो एज यू कैन सी कि एम सी एच सी बी में ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड. सो दैट इज़ वॉट एम सी एच सी इज. इट इज़ एवरेज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन वन आर बी सी टेकिंग वॉल्यूम इन टू अकाउंट. मतलब टेकिंग इन टू अकाउंट की साइज ऑफ रूम क्या है, साइज ऑफ आर बी सी क्या है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू दैट एम सी एच सी इज देयर. एंड एम सी एच क्या बताएगा? बस टोटल अमाउंट बताएगा कि 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है. सो एम सी एच बोथ इन केस ऑफ ए एंड बी विल बी सेम बट एम सी एच सी इन केस ऑफ बी विल बी मोर. वाई? बिकॉज इट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड. सो हाउ विल यू थिंक ऑफ द फॉर्मूला नाउ? एम सी एच सी इज विथ रिस्पेक्ट टू द साइज. ओके, अगर इफ़ यू नो एक रूम में कितना एम सी एच है एंड इफ़ यू नो द साइज ऑफ द रूम विच इज़ एम सी वी तो यू विल गेट एम सी एच सी. MCHC का one formula is MCH upon MCV. But if in the question they have not given size of one RBC and hemoglobin concentration in one RBC and अगर वो लोग ने all together पूरे का दिया है तो all together MCH का क्या है? हीमोग्लोबिन. तो अगर तुमको पूरे बॉडी का हीमोग्लोबिन पता है एंड पूरे बॉडी में हाउ मच वॉल्यूम आर RBC इज ऑक्यूपाइंग विच इज जब PCV पता है तो MCHC आ जाएगा. ओके, MCHC इसका भी percentage because it is telling you about the concentration, no. So percentage और gram per DL. यूनिट भी याद रख लोगे तो भी you will be able to do. MCHC का यूनिट is gram per DL मतलब hemoglobin with respect to size of the room. Now RDW it is not asked वैसे तुमको it is not asked बस remember it is the variation in the RBC का size. So hope you have got it. Now we'll revise फटाक से. We'll get into the normal ranges. We'll remember that. Okay, first PCV normal range 45%. Males में you go 52 तक and females में go till 47. MCV normal range 80 to 100 femtoliter. Why liter? Because volume है. Now MCH से what did I tell you to remember? MCH से remember mass. तो यूनिट्स विल बी पिकोग्राम. नॉर्मल रेंज 27 to 32 पिकोग्राम. मतलब एक आरबीसी में इतना ग्राम पिकोग्राम हेमोग्लोबिन शुड बी प्रेजेंट. MCHC नॉर्मल रेंज विल बी 33 to 37 यूनिट परसेंटेज. ओके, सो MCHC. सो हाउ विल यू रिमेंबर? MCH 27 to 32 है, उसके जस्ट पास 33 to 37 MCHC हो गया और MCV 80 to 100 femtoliters. PCV 45. PCV का ये आधा नेम है हेमाटोक्रिट. एंड व्हाट डिड आई टेल सबसे स्टार्ट में कि M से स्टार्ट होने वाले आर फॉर वन RBC. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नाउ यू डोंट हैव टू मग अप द फॉर्मूलाज. ओके, and you can derive the formulas, okay, if you are not able to remember. Okay, so yeah, thanks for watching. Next video will be about various methods of hemoglobin estimation, but I will not be covering Sahali's ka matlab how will you perform it. That there are multiple videos available. I will tell you the questions that they ask in the Viva. Okay, what are the various methods of hemoglobin estimation? Okay, sign method, hemoglobin. Okay, so yeah, thanks for watching
And if you like this video, so like, share and subscribe.